Hey, hi everyone. We are live for the day 8 of 30 days live session series, and I welcome you all. I'm Dr. Jatin. I'm a physiotherapist. और अगर आप 7 दिन से कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक यू नो दैट वी आर डूइंग इन लाइव सेशन सीरीज विच इज काइंड ऑफ अ डिस्कशन काइंड ऑफ एन एक्सप्लोरेशन. हम साइंस के बारे में बात करते हैं, हम बुक्स के बारे में बात करते हैं, and it's in kind of an change every day. I try to bring something new and try to discuss, so I can also grow and I can find something in each jahan pe uh, it can be more of valuable and it can be of more of kind of replicable in terms that I am getting something, I'm learning also, and also the people who are watching this getting some value out of it. तो इसी के साथ आई थिंक दिस इज डे 8 ऑफ आवर 30 days लाइव सेशन सीरीज. एंड अभी तक हमने एआई के बारे में बात किया है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज इट एक्साइट्स मी, और मुझे लगता है कि एआई के बारे में जानना और उसको समझना इट इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल स्किल. अगर कोई अभी 21st सेंचुरी में सीख सकता है, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग आई थिंक जो हम सबको सीखना चाहिए. सो एआई के बारे में हमने बात करी. हमने फिजियोथेरेपी के बारे में बात करी बिकॉज मैंने अपनी लाइफ के 6 to 7 years फिजियोथेरेपी के साथ स्पेंड किए हैं. मैं अभी भी उसको लाइक फिजियोथेरेपी को समझने की प्रोसेस में हूँ. तो आई विल नॉट से आई हैव डन माय मास्टर्स. आई एम करेंटली प्रैक्टिसिंग राइट नाउ. मैं रोज बहुत लोगों से कंसल्ट करता हूँ, लाइक बहुत लोगों का कंसल्टेशन करता हूँ फॉर द पेन, एंड they are going through injuries, they are going through problems in their life in terms of physical function and other things, and I try to help them in a best way. That is what my job is about. So this is what physiotherapy is about, making a person to able to do all the things which he is not able to do in his life because of any reason. It can be disease, it can be any injury, it can be any uh, it can be because of pain or myriad of reason. But as a physiotherapist, my job is to identify, screen, assess, and then plan to get him back to the place where he was earlier or better than. That's the state of thing. ग्रेट. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोर ऑफ फिजियोथेरेपी करिकुलम के बारे में. अभी अर्लियर इट वाज नॉट लाइक इन इंडिया कोई ऐसा काउंसिल या कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड बॉडी नहीं था जो फिजियोथेरेपी के बारे में इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्टेप उठाए. तो आई थिंक पहले हमारे पास इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी थी, जिसके अभी भी है आई थिंक, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, private body, semi-private body, I will say, and trying to make things better. But that was not possible until government takes an action and government हमको एक support दे कि that okay, we are here now, let's try to grow it as a profession. So things happen, things change. अभी हमारे पास नेशनल काउंसिल फॉर अलाइड हेल्थ एंड प्रोफेशनल्स है, जिसके अंदर 10 to 12 आई थिंक 10 डिफरेंट प्रोफेशंस को इंक्लूड किया गया है. उसमें से एक फिजियोथेरेपी भी है, और रिसेंटली एनसीएचपी एक्ट को रेगुलेट लाइक इनेक्ट किया गया. बिल 2021 में आया था, एक्ट अभी रिसेंटली इनेक्ट हुआ है, और इट हैज द प्रोफेसर रगना शुक्ला मैम, आई थिंक शी इज फ्रॉम गुजरात, एंड वो अभी इस काउंसिल को हैंड कर रही है. एंड उसी के थ्रू एक करिकुलम रिलीज हुआ है जिसके अंदर फिजियोथेरेपी के बारे में स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है, हमको किस तरह से चीज़ों को हर लेवल पे बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में एक बुकलेट बनाई गई है. एंड आई थिंक एवरी फिजियो और एवरी पर्सन हु इज डूइंग फिजियोथेरेपी शुड एक्सेस दैट, एंड उनको देखना चाहिए कि हाँ ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स आउट देयर, क्या एक स्टैंडर्ड होता है जो हमको फॉलो करना है, व्हाट इज फिजियोथेरेपी आल्सो, इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, आई थिंक दैट इज अ वन बुकलेट जो आप रेफर कर सकते हैं. सो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. पहले मैं आपको एक एक्चुअल बुक के साथ, लाइक जो करिकुलम है उसके साथ आई विल शो यू दैट हाउ इट लुक्स लाइक, एंड उसके बाद विल गो फॉर द समराइज्ड वर्जन ऑफ द इट व्हिच आई प्रिपेयर्ड ऑब्वियसली थ्रू द एआई. सो विल टॉक अबाउट इट, विल डिस्कस थिंग्स, एंड उसके बारे में हम आगे प्रोग्रेस करेंगे to see that okay, how it looks like and how we can really learn from it. So let me share my screen and then we can go ahead. I need to open that first and then we'll see how it goes. Give me a second. Visit the big curriculum. ठीक है. I think now we can go ahead. Okay, so this is the physiotherapy revolution
not revolution, curriculum. ओके, आई होप आई एम विजिबल। ठीक है, हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे इन दिस वे। ग्रेट, सो दिस इज द करिकुलम। अगर आप देख पा रहे हैं करिकुलम को अच्छे से, आई विल जूम इट फॉर यू पीपल जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाए व्हाट इट इज अबाउट। सो दिस इज द करिकुलम, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स competency based curriculum for physiotherapy. Now, competency based curriculum is very important term. To perform in a profession which is especially based on empathy, care, or planning, like evolving, adapting through the things, emotional stability. There are multiple things I think we need to consider how what what is important for a physiotherapist to perform at the best level. But competency is very important. Competency, and now what are the things which we need to be competent in? So that those are things I think we can see here, and we can talk about these things कि इन्होंने किस तरह से चीजों को बनाया है and how things they have made. So there are different chapters. Chapter 1 is about introduction to handbook. Second में methodology किस तरह से बनाया गया. Third में background of the profession, about why this profession holds so much importance. Practice settings क्या होना चाहिए. Recognition और title के बारे में बहुत बात हो रही है कि डॉक्टर हम अप्लाई कर सकते हैं एज अ प्रीफिक्स, एंड सफिक्स में पीटी यूज कर सकते हैं. How much it is relevant and how much it is needed, that is a different type of debate, but yep, this is what we have given now. You've been given now definition of physiotherapy, education of physiotherapist. All these things are in the chapter 3. Chapter 4 is about curriculum, bachelor's of physiotherapy, which is 5 years program now. जब हमने फिजियोथेरेपी किया था, when I did my physiotherapy bachelor's, it was around 4.5 years. So 4.5 years can like 4 years of bachelor's and 6 months of the internship. That's how it went. Now it is 4 years of bachelor's and 1 year of internship. So करिकुलम के बारे में डिटेल के अंदर वेकेशंस, एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट एंड इंटर्नशिप, किस तरह से एवोल्यूशन होगा, करिकुलम मास्टर ऑफ एमपीटी के बारे में, लाइक हाउ थिंग्स नीड्स टू बी डन, एंड लास्ट इज पीएचडी प्रोग्राम, हाउ एंड लाइक सिक्स्थ इज अ पीएचडी प्रोग्राम, सेवंथ इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन, एट द स्कोप ऑफ द जॉब एंड एरियाज ऑफ द physiotherapy intervention. So kind of a big large book, or it is not possible to read everything in this single session. So what I did, I took this as an AI. Okay, I picked it, I put it in a Gemini, and I asked Gemini to summarize it in the best way possible. Second thing, I use that information to put in a Gamma AI, जहाँ से मैंने एक presentation बनाई, and I will present that and we'll discuss around it. So it has covered most of the things, and we will be going good with the help of that presentation itself. So this is what I have made. If you people can see, let me present in this way, not in this way. Give me a second. Yeah, so this is how we're gonna present, and I think we are good to go. Perfect. So just let me plug in my charger also. Okay, so physiotherapy revolutionizing physiotherapy education in India. So this presentation outlines the new competency-based curriculum for physiotherapy education in India. It aims to standardize training and meet growing healthcare demands. Two important points. First is standardizing training. ट्रेनिंग स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है कि हर जगह एटलीस्ट एक बेंचमार्क प्रैक्टिस फॉलो की जाए, एक बेंचमार्क वे ऑफ डूइंग थिंग्स हो, जिससे जिससे एक जो स्टैंडर्ड होता है वो मेंटेन किया जा सके. अभी अगर आपको कोई भी टेक्निक परफॉर्म करनी है, कोई भी एक इंटरवेंशन परफॉर्म करना है, स्पेशली हेल्थ केयर के अंदर, थिंग्स आर ऑलरेडी बीन स्टैंडर्डाइज कि ये एक तरीका होता है, इसके साथ साथ आपको फॉलो करना है, चाहे वो इमरजेंसी एवोक्यूशन का हो, या फिर कोई भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट का हो, या जनरल प्रैक्टिस के अंदर हो. Things are being standardized in more of the things in most of the professions, like if you talk about MBBS, if you talk about dentistry, if you talk about nursing, things are being standardized from a long time. फिजियोथेरेपी एजुकेशन इंडिया के अंदर अभी भी स्कैटर्ड फॉर्म में है. अभी भी जो चाइनीज मेडिसिन है, या फिर जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, उनसे जो बहुत सारी चीजें हैं फिजियोथेरेपी के अंदर आकर देयर आर ब्लरिंग बाउंड्रीज,
एंड होता क्या है उसकी वजह से एज अ physio also and the people also they don't know what actually physiotherapy is. तो it is important कि हम जो ट्रेनिंग पार्ट है उसको स्टैंडर्डाइज कर पाए, जिससे हर एक कॉलेज के अंदर स्पेशली एट द ग्राउंड लेवल थिंग्स आर बीइंग स्टैंडर्डाइज्ड एंड एज पर द new healthcare demands or growing healthcare demands which are out there. ठीक है, so that is what this will do and I think we this is a good step. So यहाँ पे दो चीजें हैं, healthcare professionals and physiotherapists. Healthcare professionals are as defined by NCHB Act 2021 requires a minimum 3-year degree, provides preventative, curative, rehabilitative, therapeutic or promotional health services. Whereas physiotherapist, it is a professional, healthcare professional, assesses, diagnoses, treats, and physical dysfunction, uses exercise, mobilization, and electrotherapy, crucial for pain management and mobility. Recommended titles is doctor, physiotherapist, and PT. So this is a generalized thing. We can assess, we will be able to diagnose and treat physical dysfunction, especially using exercise, mobilization, and electrotherapy, which is crucial for pain management and mobility. Now, pain management is very small part of the whole thing, whole rehab process. It is there, but more of the time, it is more about improving the function, getting the person able to do the activities of daily living first, and then moving on upon the ladder as per the person's demand and person's goal. So it is a goal based, it is a structured, uh, it is more often supervised or unsupervised way of delivering care, so that the person can achieve the goals and person can achieve really good things in his life in terms of physical function. So education programs, if we talk about it, so bachelor's of BPT, सबको पता है 5 years of program is there, 4 years of academic, 1 year of internship. इसके बाद it focus on independent and clinical practice, like how we can prepare a person to be able to go for an independent clinical practice. Eligibility is 10 plus 2 plus PCB. NEET is now recommended. Above 70 plus year, competency-based integrated curriculum with a credit system. Now, here is the thing. Now it's more of a credit system. You will get credit on based of how many courses you are going for. ठीक है, आप जितने कोर्सेज करते हो, जितने डिफरेंट आपके ट्रेनिंग आवर्स होते हैं, उसके बेस पे कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं और क्रेडिट आपको आपके जो बैंक होता है, जो आपका जो एजुकेशन बैंक रहेगा उसके अंदर इट विल गेट क्रेडिटेड एंड आई थिंक that will form a base that okay, if you did a degree, this is how much credit you have earned out of it. MPT is more of specialization. It aims for advanced knowledge, teaching and research. Eligibility is BPT for 50% entrance test. Also include dissertation, advanced clinical reasoning, and etc. Now, third is a PhD in physiotherapy, which is 3 to 5 years, 4 to 6 years of time. This is more about original contribution. PhD का मतलब होता है doctorate in philosophy. When you talk about philosophy, you understand things in more detail. Why, how, when, what, everything is in detail. You are doing a PhD or doctorate of philosophy in certain topics, जिसके अंदर आपको you need to research again. You want to dig in that topic at the minute levels or details, so that I can bring out something new. It's like a churning part. So आप एक BPT से बेस पर प्रिपेयर करते हो, MPT के बाद MPT में आप you go for some specialization and some research, and then you go for the PhD to generate something new, to create something new. So चार चीजें, what is more often a good thing in this system. Let me see. Yeah, it is all good. I can see. Okay, I think there's a comment. Thank you, Chirag. I think it's kind of already there. I am just presenting it. So greatly made curriculum, I will say. So curriculum innovation versus competency-based education. First is focus on practical skills or rote knowledge. आप सबने कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस, अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि अभी तक जो आपने पढ़ा है या फिर आप जिस तरह की चीजें पढ़, अभी भी आई थिंक आने के बाद भी थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को चेंज होने के अंदर, बट ज्यादातर फोकस किया जाता है
व्हाट पे, नॉट हाउ पे, ठीक है? क्या सबको पता होता है करना, लेकिन कैसे करना है और कितना करना है, कितने अच्छे से करना है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? सो प्रैक्टिकल स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूट नॉलेज से। आपको पता है एथिकल होना है, बट किस तरह से होना है, आपने क्या वो प्रैक्टिस किया है? क्या आपको ये पता है प्रैक्टिस के अंदर क्या एथिकल बाउंड्रीज़ होती है? क्या आप कम्युनिकेशन आपने प्रैक्टिस किया है? हाउ हैव यू कम्युनिकेटेड लाइक व्हेन अ पेशेंट इज कमिंग टू यू, कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसके कंसर्न्स बहुत सीरियस हैं, जिसको लाइक देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू शो एम्पैथी, यू नीड टू शो केयर, यू नीड टू असेस ऑन दोज वेरी वेरी डिटेल पैरामीटर्स। क्या आपने वो प्रैक्टिस किया है? तो दिस इज अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ठीक है? आप फोकस जो होगा प्रैक्टिकल स्किल्स पे मोर रेदर देन द rote knowledge needs to be done. This is what curriculum says. How much it will be delivered at the base level, that is a question again. सेकंड क्रेडिट आवर सिस्टम, दैट इज स्टैंडर्डाइज लर्निंग वर्कलोड ग्लोबली। आप कुछ सब्जेक्ट चूज करते हो, उसमें से आप जितना पढ़ते हो, जितने आवर्स उस सब्जेक्ट में स्पेंड करते हो, उतना ही आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। Integrated curriculum that blends basic science with clinical application early on. That's good. Advanced teaching and assessment uses modern methods like OHCE simulators and portfolios. So OHCSE simulators and portfolios. I don't know about OHCE right now. Simulator means simulation. आप उन तरह की जो टीचिंग जो फॉर एग्जांपल जो आप कर जो भी सिचुएशंस आपको हैंडल करने वाले हो, उन सिचुएशंस का सिमुलेशन के थ्रू आपको सिखाया जाना, इट्स काइंड ऑफ अ सिमुलेटर। ठीक ठीक है? सो दैट इज व्हाट सिमुलेशन इज। एंड एडवांस टीचिंग मेथड असेसमेंट, आई थिंक दिस इज ऑलरेडी बीन डन। नाउ career pathways, where all these physiotherapists can work. We can work in clinical settings, we can work in academic settings, or we can work in a research setting also. Clinical settings के अंदर hospitals, private clinics, sports centers, home care, progression for physiotherapist to director, HOD, or schools or gym centers, fitness centers, corporate centers. There are myriad of options available where we can go and we can practice in clinical setting especially. Academic settings involve assistant professor to dean, requires MPT and PhD. Teaching and publications are major focus of the things. And academic is a strong backbone जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाना चाहिए. I will say those who are really interested. I am also interested. That's why I'm here. I'm trying to start something new on a platform. So this is what like the need of the hour to start something in academics or teaching. So good one of the good pathways where we can start. Research settings like scientist to research head, and again it requires MPT, PhD, and research experience and publications. If you are going for a clinical thing, there are different job description. There is a clinical physiotherapist whose role is to patient care, treatment, equipment management, basic exercise and electrotherapy. ये basically जो आप bachelor's के बाद आप बनते हो, like that is a clinical physiotherapist. With experience, you go for a senior clinical physiotherapist, and then more experience with some time, chief physiotherapist. And academic roles also kind of assistant professor, then the associate, and the then professor. This is how the ladder moves. So okay, so this is what it has prepared till now. Great. I will exit the present view from here. So this is what it prepared, and I think most of the things are covered into the this presentation. But yeah, let's go back and talk about other things. Okay, so I'll say curriculum is one thing which needs to be there, क्योंकि एक standardization बहुत important होता है कि आप चीज़ों को एक बुकलेट की तरह फॉलो कर पाओ, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ चेंज। और चेंज जब आएगा, आई थिंक जब ये अप्लाई होगा, जब आप इसको समझोगे पहले कि क्या होता है, क्या क्या करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप जब आप चीजों को करने लगोगे, आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड कि वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट नीड्स टू बी चेंज नाउ, व्हाट इज द डिमांड हियर, एंड व्हाट इज द राइट how what is the right way of doing things. ठीक है? So that's how things will change, but I think this is a good step जहाँ पे at least there is a step taken in pursuit of getting things done. Because honestly, as a physiotherapist, when I entered in the profession, I was feeling little bit on a
words that okay, what is my identity, what where we need to see if we want to look for a standardization. Okay, obviously I got an access to world, how the world is doing, so I can relate to things that okay, there are people who are doing good things and I can look back to them and I can see that okay, things are needs to be done this way. बट स्टिल एट अ, अगर ये बेस लेवल से स्टार्ट होता है, अगर आप एक जो एक इंडिविजुअल है, जब वो एक बैचलर्स के अंदर कोर्स के अंदर एंटर करता है, तो आप उसको अगर ये सब चीजें बताते हो कि दीज आर थिंग्स विच वी नीड टू एस्पायर फॉर, दीज आर द एथिकल वैल्यूज, ये हमारे प्रोफेशन के कुछ सेंटर कोर पिलर्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, इस तरह चीजें होंगी, आप उसको अच्छे से अच्छे करते हो, उसको आप उसको एक ग्रेडेड प्रोग्रेशन देते हो, तो दोज थिंग्स रियली मैटर बिकॉज दीज थिंग्स serve us good in the long term. The person who has gone through this rigorous curriculum will get more of understanding in terms of what needs to be done in the what time at the right time. So I'll say good step, but again will take some time to stabilize, because वो कहते हैं कि once the formation is there, then there is a chaos, then there is a reformation, and then it stabilizes to something, and again there is a new formation. So this is the cycle of change, and that is needed for sure in this case also. Great. So this was about curriculum today, and हमने physiotherapy curriculum के बारे में बात किया. Kind of a lecture type thing, but I didn't like today's session a lot. I thought that it will be more of a kind of simple way of explaining things, because I didn't got time to prepare as such. So I thought that okay, I will prepare something from here and let's talk about those things. So uh, yep, but yep, we are in a learning process, so I will take it as a learning and try to keep something interesting and break things into different parts, and so that we can discuss different things at different time slots, and we can make this session more productive as such in parts. So rather than talking about certain things in a long session, I will try to prefer for some short segments, so that we can talk about news. We can talk about like I started in recent videos about the Instagram thing, so we can do that also. And this something which we can discuss about, either some pain, some joint, anything which we can really get our hands on. Some recent researches which are out there. So I'll try to bring something good information, and that's how we're gonna progress for the coming sessions. Great. I'm short of words today, so we'll wind up this session early. But we'll meet again tomorrow, and we'll try to mix things up and bring something new. तो थोड़ा इसको हम अलग तरीके से करेंगे, and different segments, short segments, and to make it more interesting, I will try to bring something. Also, I will surely prepare some short content. The short contents, I think we can grab more eyeballs, and then slowly, gradually, we can build it as a community. But yeah, we will surely make some things. We'll make things done, and this is the process, and we will go through it with all our heart. So until then, take care, have a great day, and we'll meet tomorrow. And let's begin with the day 9 around 9 or 9:30 p.m. We'll meet again. Take care. I hope everyone is watching RCB versus Punjab Kings. So hopefully the Kohli wins, and we'll see him lifting the trophy again, once again, or not once again. This is the first time he'll be lifting the trophy. Yeah, in IPL itself. So okay, bye bye. See you. Take care.